नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सबका स्वागत है। और आज जो हम आपके सामने लेके आए हैं वो है हाल ही में कान्हा शांतिवनम में एक बहुत बड़ा यूथ कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें 15,000 ऑल ओवर वर्ल्ड से यूथ आए हुए थे। उसके बारे में हमारी जो पुणे की वाघोली टीम है, ये हमें इसके बारे में बताने वाली है। वाघोली में की एक पूरी टीम गई थी। यहाँ के एक दो दो तीन कॉलेजेस भी गए थे और ये टीम उनके साथ गई थी। तो मुझे बेहद खुशी होती है आज के जो हमारे वाघोली के जो एंकर है उनको वेलकम करने के लिए। नमस्ते संदीप, वेलकम टू द शो। Namaste, good morning, all. गुड मॉर्निंग। सो ये जो राइजिंग इन काइंडनेस जो थीम थी और ये बहुत बड़ा जो यूथ कॉन्फ्रेंस था, ये पहले कभी इस मैग्नीट्यूड में कान्हा में हुआ नहीं था। और आप लोग वहाँ पर्सनली गए थे, जाके आए थे। आई नो देयर इज लॉट ऑफ अदर पीपल इन द टीम एज वेल जो आज के प्रोग्राम में आएंगे। लेकिन ये जो Yeah. आपका पर्सनल अनुभव है, ये आप अगर आप उससे थोड़ा स्टार्ट करें कि आपको कैसे लगा, आपका फर्स्ट हैंड जो प्रतिसाद या जो जो इम्प्रेशन था वो कैसे था, अगर आप उससे स्टार्ट करते हो तो दैट विल बी ग्रेट। एंड फिर आप इस कार्यक्रम के सूत्र हाथ में लेके आपकी टीम को बुलाते रहिए, फिर और डिस्कस करते रहिए। नमस्ते, थैंक यू। Sure. Hello, all. Good morning, bonjour, welcome, bienvenue, सबको सुप्रभात, or thank you very much for joining on this wonderful Saturday morning. And we have a very interesting topic to explore and very interesting participants today. We have a lot of testimonies to share and lot of experience to share. Today's subject is expanding kindness consciousness. And before we start sharing our views on this topic, let's take a minute to understand what is kindness. And kindness is something which it's like a word and it's like an act also. The word which we must have came across in our childhood in English subject, and then we continue to read for it, we continue to observe for it. If you go by a bookish definition of kindness, it can be approximately defined as the act of being generous, friendly, compassionate, considerate. And like most of the qualities, kindness is also inherent within each of us. We have the emotion of hatred, love, jealousy, compassion, and then we have kindness as well. To इसको मोटा मोटा तौर पे कैटेगराइज करना हो तो काइंडनेस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अ पॉजिटिव इमोशन. एंड many times we think that kindness when we think of kindness it's about like giving something monetary, or giving parting a part of your wealth, or giving some material goods. It's not always like that. You can always, I mean, it is not necessary that you should be giving, donating, or taking a loss, or be a loser to be kind. You can be compassionate, you can be a winner, you can be a go-getter, and you can still be kind. For example, being patient is a form of kindness. When most of the people lose their patience, when you are standing in a queue and there are a lot many people in front of you, and then if old lady comes up and you give your place to her, it doesn't take money, but it takes your time, maybe a bit of energy, but this is also an act of kindness. What I learned from my visit to Kanha and attending the uh, kindness get together or workshop is that listening to others. So this was my takeaway or my understanding about kindness, and allowing others to speak, listening their point of view. I know it's very difficult when you are charged up. What the survival instinct is to speak, at least for me. But when you go into the deep and explore it spiritually, when you explore it via your own transcendental practices, meditational practices,
And when you get into a charged up atmosphere like Kanha, where most of the people are charged up with a certain kind of energy, they are exuberating kindness, and then you kind of absorb it like a sponge, and then something comes up from you, and you understand that it's about being patient for me. Moving forward, listening to others or hearing others' point of view, not being prejudiced is also an act of kindness. Being polite is also an act of kindness. In corporate world, when we're trying to negotiate something, trying to create win-win situations is also a kind of kindness. And of course, sharing whatever material thing which you have whenever possible is also an act of kindness. These are some of the examples of kindness. Our spiritual practices or transcendental practices help us to expand these qualities. For creating such an expansion, Heartfulness has had organized an international youth conference. It was called as Rising with Kindness. It was held at Hyderabad, Kanha. Today, we have on board with us some of such practitioners who had attended this event and experienced some transformation in their lives, some changes in their approach. And we will try to take insights from them and understand how did the kindness affect them and how they are trying to adopt them in their daily lives. So with just to moving ahead, we will bring our first very interesting participant and practitioner on board. His name is British. Can we have British? Hello, Can we? Yeah, thank you. Hello, British. How are you? I'm fine. Good morning. Thank you. Good morning. And can you tell a bit of your background? How did you connect with heartfulness? And in short, what you are doing and uh, I mean about yourself. Yeah. So I am currently studying post graduation in public policy from MIT World Peace University, Pune. So I came across about Kana Shantivanam from my institute. See, basically, I completed my bachelor's and then I was working in uh, many different sectors. And then I was also preparing for State Public Service Commission from my home. Actually, I'm from West Bengal. So I was preparing myself for that. But again, I thought that I need to upgrade some my educational background, and that is why I came to MIT and for studies basically. So from there, I got to know about Kana Shantivanam, and I instantly joined the conference, the program, and I should say that that was never I can say that. Matlab, it was really helpful for me for to to मतलब खुद को जानने के लिए खुद को पहचानने के लिए और अच्छी तरह से काइंडनेस के बारे में और अच्छी तरह से जानने के लिए तो Okay. दिस वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी. Okay. Uh, it's very nice to hear your background from where you have came. Visiting Kana Shantibanam and attending this Rising with Kindness workshop, uh, how has it changed you? How has it changed your approach towards kindness before the workshop and now when you attended the workshop? How do you feel? What changes you have observed in yourself, and can you share any insights and practices which you are doing? Yeah, surely. See, thing is, kindness. I should say that I already built up this thing some time before. But what was issue with me कि क्या होता है मतलब you become very much hesitant sometimes to connect with people. To and in this case मतलब इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो सिर्फ pardon me for my Hindi, broken Hindi. But the thing is, क्या होता है कि आप ना थोड़ा मतलब दिक्कत करते हो कि दिक्कत होती है कि लोगों के साथ जब बाजू में कोई अगर बैठा है या फिर किसी के साथ बात करनी है तो यू बिकम लिटिल बिट हेजिटेंट इन द फर्स्ट गो. बट गोइंग टू दिस कॉन्फ्रेंस इट हेल्प मी इन अ वे कि आई केम टू नो कि ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता या फिर कोई कोई बात नहीं करना चाहता. तो यू फर्स्ट हैव टू टेक द Yeah. फर्स्ट स्टेप
ये मैंने सबसे बड़ी जो सीख मैंने वहां से ली है कि यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. दैट इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स एवरीवन, टुवर्ड्स योरसेल्फ. Okay. So yeah, this is a very rare event, that kindness to yourself. But it is very important, I must say. That is also one thing I have learned from there. If you are not Okay. kind enough to yourself, you cannot be kind to anyone else in this world. So So yeah, yeah, please. yeah. So yeah, No, so those are the two main things which I took from it. so very two interesting points you have mentioned, and I would like to for you to elaborate. First, you mentioned the first step or being bold, and second, you mentioned being kind to yourself. So, can you throw a light, explore a bit how, I mean, boldness and kindness are a bit related to each other? See, boldness and kindness go hand in hand. कैसे होता है कि you are kind, तो वो दया आती है. काइंडनेस का हिंदी सिंपल होती है दया. तो आप में वो दया है, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर किसी के लिए, इन टू द फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट. क्योंकि सिर्फ वो हम लोग तो ह्यूमंस के साथ हम लोग काइंडनेस नहीं करना है, हम लोग को हर किसी के साथ करना है. देयर इज एनिमल्स, देयर इज होल नेचर, देयर एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस. तो हर किसी के साथ वो काइंडनेस बरकरार रखना है. यू हैव टू शो दैट काइंडनेस टू एवरीवन, एवरीथिंग. और उसके लिए बोल्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काइंडनेस मतलब अपने दिमाग के अंदर नहीं होता. यू हैव टू एक्सप्रेस इट, एंड टू एक्सप्रेस दैट यू हैव टू बी बोल्ड. सो दे Okay. बोथ गो हैंड इन हैंड. या Okay. And about being kind to yourself. काइंड टू योरसेल्फ इज द मोस्ट important thing, I must say. Why? Because it's being true to yourself. Being kind to yourself is being true to yourself, to understand yourself, to Okay. what you are going through, and how to cope up with those issues. There are a lot of issues in our everyday life, every way, many ways. So you have to be truthful to yourself that yes, this is going inside me. Okay. These are the reasons why these are going on with me, and these are the ways how I can deal with them. So this is being kind with yourself, Okay. to really understand yourself and go through the process. ओके, आप कुछ अपने अनुभव, अपने आई मीन प्रैक्टिसेस शेयर करना चाहोगे कि आप जब कान्हा से वापस आए तो आपने ये हाउ डिड यू इम्प्लीमेंट दिस, आपने इसकी शुरुआत कैसे की, हाउ डिड यू ऑगमेंट और इंक्रीज योर काइंडनेस काइंडनेस और हाउ डिड यू एक्सपांड इट, हाउ डिड यू इंक्रीज इट? I basically started practicing kindness, and the thing I said, okay, being bold, that hesitant thing which ओके. was there in me from the very beginning. I started working on that, and in fact, I started it from the very beginning when we were returning from there. So, in the train, in the bus, in the public transport, in the market, anywhere I am, even right now when I'm in Pune, I'm staying outside my home. I'm continuing to follow that wherever I am, whenever I am with anyone, with anyone. It is really मतलब बहुत अच्छा लगता है. ये बहुत ही अच्छा लगता है. कैसे? क्योंकि वो जो मेरे अंदर जो रिलक्टेंट जो चीज थी ना, कि हेजिटेशन होता था, अभी प्रैक्टिस करने से क्या हो रहा है, हाँ थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ये शुरुआत में ऐसा होता है. ये हर किसी के साथ होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को अंदर से खुद को समझाना बहुत टफ चीज है. तो हमको खुद को ना सबसे पहले समझाना होता है कि ऐसा नहीं है. दूसरा जो आदमी है, वो कुछ नहीं सोच रहा है. यू फर्स्ट गो एंड टेक द फर्स्ट स्टेप. तो मैं खुद को वैसे ही समझाता हूँ कि यस, यू गो एंड यू डू इट. नथिंग देयर, वोंट बी एनी काइंड ऑफ इश्यूज. नो वन्स गोना डू एनीथिंग, नो वन्स गोना से एनीथिंग. कीप ऑन डूइंग. सो ओके, दिस इज हाउ आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ एवरी डे. ग्रेट ग्रेट. एक एक आप मुझे एक और चीज बता सकते हैं कि अभी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हैं और इसके बाद में आप काइंडनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएंगे,
और इन दोनों में हाउ डिड दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? Spiritual practice. Meditation. Yeah, that is a very important thing. How meditation helps you to discover yourself, unfold your characteristics of your soul, I must say. See, we are souls, so we need to connect with the higher being, and meditation is the only way to connect with that. And when you get connected with the higher being of yours, the higher version of you, I must say. There, I'm not talking about any kind of spiritual, like any god. There is god, but I'm not talking about the religious part. It's the spiritual part which connects you with you. So Okay. only meditation can help you in that. And when you connect with yourself, everything around you becomes easier and more clear to you. Okay, great. Thanks, British, for your valuable insights. There are also many other participants in the line. So we can just to conclude that two insights from you were uh, being bold and being kind to yourself and just starting from that. And thank you for providing this insights and input for us. Thank you. Thank you. So our next participant is a wonderful youth student from a college, and I saw him in the, uh, conference, and I was very pleased and very impressed with him. So, Deep, can you introduce yourself a bit? Namaste, In Adam, Sat Sri Akal. Myself, I am from Pune good and morning. currently I am pursuing BTech degree from PCCR, which is Pimpri Chinchwad College of Engineering and Research, which is based in Ravet, Pune. And I am thanking the Kanha team for inviting a college, giving me leadership for getting my college team with me and having a participation in everything. Like I have participated in many things. Yeah. Yeah. So, yeah, just to be quick, and I know you have a lot to share, and but we have a Yes. time limitation. Just to understand, first of all, after coming back from Kanha, how did how what has I mean, how has the kindness expanded? I mean, how has it transformed you in terms of kindness and your view towards the world? So basically, being loyal, there have been many changes in me. Like starting from myself, कि पहले मैं आई वॉज एक्सट्रोवर्ट कि मैं सोचता था कि ऐसा करूँ तो क्या होगा लाइक किसको कुछ बोल दिया तो कैसा होगा नाउ आई एम अप टू कि भाई सब अपने हैं विल से ब्रदर एंड गो इट ऑन देन दे आर लाइक बाद में वहाँ पे कुछ लीडरशिप क्वालिटी सीखी मैंने काइंडनेस सीखा बहुत कुछ नए नए चीज़ इम्प्लीमेंट किए नए नए एक्टिविटीज़ किए जैसे यूनेस्को था ट्री प्लांटेशन था सबसे बड़ी चीज़ हमारी टीम के लिए था कि लाइक सैंडलवुड ट्रीज हमने आज तक देखी नहीं थी एंड हमने 1000 प्लांट्स किए थे वहाँ पे सो वो बिगेस्ट अचीवमेंट था हमारे लिए देन यूनेस्को जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को हम मिले दादी के साथ इंटरेक्शन हुआ मेडिटेशन हुआ एंड लाइक बीइंग लॉयल कि अभी तक मेडिटेशन मैंने आज तक कभी नहीं किया था एंड ट्राई भी किया है तो आई वाज जस्ट डूइंग ओम या फिर लाइक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट बट वहाँ पे आके समझा हमें कि क्या होता है कैसे करना होता है देन वेज ऑफ मेडिटेटिंग वेज ऑफ लाइक मोटिवेशन कैसे करते हैं लाइक कैसे किसको चेंज करते हैं एंड Right. रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है मेरे फ्रेंड के साथ कि ही वाज बिट सैड अबाउट हिज स्टडीज एंड ऑल एंड मैंने कुछ नहीं बस जो मन में है बोलते गया एंड ही गॉट इट मोटिवेटेड Okay, I think for you it's more about absorbing the vibrations and एग्जैक्टली then द and it सेंसेशंस flows एंड एवरीथिंग द इमोशंस and understanding others' point of view. Great, great. एग्जैक्टली Just very quickly, in one or two lines, can you tell us what is the way forward for you? How you are going? I understand, right, that you are being more empathetic towards your fellow colleagues or friends, and that has helped both of you as well as your friends. Can you tell me what will be the way forward for you? द फर्स्ट थिंग आई डिड कि द नॉलेज आई हैव टेकन फ्रॉम काना इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द पीसीएमसी जितना ज़्यादा वो उतना तक किया है मैंने कि लाइक
भाई तुम भी इनमें इन हो, मोटिवेट हो, लाइक उनको इतने मोस्ट ऑफ द लाइक 80% लोगों ने मेरा नंबर लेके रखा है फॉर मोटिवेशन. Then Okay. there are like many small activities we have taken now, like tree plantation किए हमने यहाँ पे आके. Then social works कुछ ना कुछ किए हमने यहाँ पे आके. Like इतना मोटिवेशन हो रहा है कि like पहले हो जाता कि यार एक्टिविटी दे दी, ये कर लेते हैं, एंड अभी नहीं सर हमको करना है, परमिशन ये ले लो, बाकी हम कर रहे हैं. लाइक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो बहुत डेवलप हुई है. पहले हम Okay. सर के पीछे पड़ते थे कि सर हम ऐसा प्लान है करें या नहीं करें, एंड अभी Okay. कि सर हम कर So रहे हैं. I see a very interesting trend between both British and you is that you both have become proactive or bold, and whatever good qualities, whatever good things you have learned, you are trying to propagate it or diffuse it towards the rest of the world, so that they can also benefit from that. Uh, Thank you, Deep. I mean, it's a always pleasure to interact with you. Your photos and your energy we can You visibly brother. see. Yeah. Because of I mean lack of time, we have to come up with the next participant. Yeah, yeah. So thanks for joining. Thank you. So we have one more guest and participant with us, Dheeraj, and he's from corporate, and we had all, I mean, interacted with him in detail at Kanha. So, Dheeraj, can you briefly introduce yourself? Sure. Good morning, everyone. Namaste. I'm Dheeraj Panjwani. I work in Accenture. I've been in the corporate world for the past 13 years. And the experience in Kanha is like, I cannot express it. It's unbelievable. And I'm a Okay, very new joinee in meditation. I just started my journey 4 months back. okay, great, great. So, I mean, we all went to Kanha, and I saw you there. And can you tell me what difference do you see in regards with kindness before and after? And can you tell me what kindness means to you as well? Elaborate Sure. on that. Yeah. राइट राइट. मैं इसको हिंदी में बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप वो इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर हाँ. पाते हो. सो कान्हा जाने से पहले मैं एक डिफरेंट पर्सन था. मुझे जैसे ब्रिटिश ने बोले या फिर दीप ने बोले, राइट, मैं भी एक हेसिस्टेंट था कि भाई किससे बात करूं. लेकिन जब मैं कान्हा गया, आई सी द डिफरेंस. पीपल केप्ट कमिंग एंड टॉकिंग टू मी, और उनका मतलब विदाउट एनी रीजन दे वर डिस्कसिंग और दे वर हेल्पिंग आउट. अगर मैंने उनको अगर पूछ लिया कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो मेरे साथ जाके वहां पे मुझे छोड़ के आते थे. सो आई सी दैट सेल्फलेस एक्ट, काइंडनेस, राइट. सो आपने जैसे पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली काइंडनेस मीन्स टू यू, तो सबसे पहले जो मेरे मतलब मैंने जो सीखा वहां पे, यू शुड बी काइंड टू योरसेल्फ, बिकॉज इफ यू आर काइंड टू योरसेल्फ ओनली देन यू कैन बी काइंड टू अदर्स. It has made a lot of difference, Mhm. क्योंकि what I have seen is, अगर आप kind हो and you can be kind to others, right, so you think thoroughly. मतलब आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, it makes a lot of difference. And I have मतलब मेरी family ने they have started seeing the changes in myself. Okay, great, great. So, what are the, I mean, practices which you do to expand your kindness? I mean, do you do any transcendental or spiritual practices, and how does they help you to expand your kindness? And any, I mean, blockages you or liberation which you felt after doing that? जैसे मैंने कहा, मैंने अभी अभी मेडिटेशन स्टार्ट किया, एंड बेसिकली इट काम्स योर माइंड, राइट. और आफ्टर कमिंग फ्रॉम दी दिस कॉन्फ्रेंस, राइट, मुझे ये समझा कि भाई लाइक लाइक आई सेड, राइट, बी काइंड टू योरसेल्फ. द सेकंड थिंग व्हाट आई लर्न देयर इज कि uh, the listening is the loudest form of kindness. So as a part of practice, what I have started is, like, I have been trying to listen more than to speak, because as Sandeep ne bhi bola ki bhai, we have that high vibrant energy, right, we want to speak. But what I have started, like, holding myself and trying to listen to others, because
आई डोंट वांट टू बी अ सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर मीन्स कोई आपसे उम्मीद से आपके पास आ रहा है बात करने के लिए, और हम अगर मोबाइल पे हैं, कुछ और इधर ध्यान दे रहे हैं, हम उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं. सो दैट्स आई मीन वो ट्रस्ट चला जाता है. तो आई हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दैट प्रैक्टिस कि भाई लिसन मोर एंड टॉक लेस. Yeah, what a wonderful. I mean, really nice to hear this. And can you give us what will be the way forward for you? सबसे पहला वही होगा कि आई वांट टू बी लाइक प्रैक्टिसिंग मोर अबाउट टॉकिंग लेस एंड लिसनिंग मोर. सेकंड, आपको जब भी मौका मिलता है, आप हेल्प करो किसी को. ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आ रहा है और फिर हम उसको एक्शन लाने में हमको टाइम लगता है. आ रहा है, यू डू इट, डोंट वेट फॉर इट, बिकॉज दैट इज व्हाट आई मीन. जैसे दिमाग में आता है, यू डू इट, दैट इज हाउ इट विल हेल्प यू एंड ऑल्सो अदर्स. छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें होती है. सो यू स्टार्ट स्मॉल. What a wonderful thought. Just to conclude, you said listening and implementing small acts of kindness, taking small steps so that it rolls on to become big. Dheeraj, it was pleasure talking to you with you. Thank you. For the lack of time, we have to stop and we move up towards our next participant, Amit. And Amit is also a very high energy participant. We have seen very transformational changes. Brother, can you very quickly, introduce yourself, and in the same this thing for the lack of time, tell us your, experience in transformation and your acts of kindness. Yeah, sure. Good morning, all of you. And myself, Amit Baduja. I am from Pune, and I recently joined Heartfulness meditation. Before I don't know the meaning of the meditation. I don't miss like, uh, I really, I got a chance to visit Kanha also in very short term. So I visited Kanha and I experienced about the nature. Nature क्या होता है basically? नेचर से हमें क्या मिल रहा है. नेचर से हमें बहुत सारी सारी चीज़ें मिल रही है, लाइक वाटर, अपने को सन मिल रहा है, देन जो एयर है वो मिल रहे हैं, सब चीज़ें मिल रही है. लेकिन हम आप नेचर को क्या दे रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ. वेट बहुत था पहले, लेकिन आप अगर मेरा आज वेट देखोगे, यू कांट इमेजिन. सो काइंडनेस, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, expect from ourselves. Then you will realize people will come to you and they will say that you did a good job and you are on a right track. So this is the one thing. Now what I am following, Yeah, that I will tell you. मैं बेसिकली अभी please. काइंडनेस कैसे फॉलो कर रहा हूँ. लाइक सिंस मॉर्निंग माई रूटीन वॉज वेरी डिफरेंट. अर्लियर बिफोर काना माई मॉर्निंग रूटीन वॉज लाइक, मैं 8 बजे उठने वाला आदमी, मैं आज सवेरे 4:30 को उठ जाता हूँ. 4:30 to 5 मेरा मेडिटेशन होता है. 5 o'clock Wow. मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ 6:30 तक. 6:30 से 8 o'clock मेरा प्राणायाम योगा होता है. एंड देन पोस्ट दैट आई विल स्टार्ट माई वर्क. एंड आई एम नॉट डूइंग हार्ड वर्क, आई एम डूइंग स्मार्ट वर्क. Oh, And super. I'm very much confident about that. Let's come to the another point. So if I want to go outside, so मैं जब सोसाइटी के बाहर निकलता हूँ तो सबसे पहले मेरी मुलाकात होती है सिक्योरिटी गार्ड से. तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को नमस्ते बोलता हूँ. तो आफ्टर 15 डेज सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया, खुद बोला, सर आपके जैसा आदमी मुझे मिला, मेरी बहुत मीन्स मेरा यहाँ पे जॉब करना मेरा सफल हो गया. सेकंड थिंग, मैं प्लांटेशन बहुत करता हूँ अभी, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ सैटरडे संडे. सेकंड थिंग, आश्रम विजिट करता हूँ, बच्चों को डोनेशन में हेल्प करता हूँ. That's all from my end. That is kind of work I'm doing, and that's how my journey starts. Fantastic. I can, And it was. I will just add more one thing here. Mhm. Kindness is just a magic which I'm seeing in myself right now. Super, super. And that magic you have, there are two elements to that is to start doing it, as you said, and with your actions, you have started doing it, and then doing it loudly. Great, Brahmit. Great talking to you. Yes. So,
As we can see, it was I अभी mean, आप एक मिनट आप अगर मेरी बेटी को देख रहे हो, अभी आपके स्क्रीन के सामने मेरी बेटी का फोटो है, वो भी फॉलो कर रही है मेडिटेशन. शी इज डूइंग क्लीनिंग नाउ. okay, या really great, great. ये देख के ऐसा लग रहा है कि आपने जो काइंडनेस है ये सब जगह पे बटोरा है, और आप यू हैव बीन आपने अपने साथ ट्रांसफॉर्मेशन किया, और बाद में ये ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ऑफ द पीपल. अभी और ये एक एक और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. अभी देखो काइंडनेस मैंने भी हार्टफुलनेस ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे क्या क्या मिला मैं वो बताता हूँ. सबसे बड़ा लर्निंग जो मुझे कॉलेज में नहीं मिला, मुझे जीना सिखा दिया हार्टफुलनेस ने. सेकंड थिंग, मुझे हेल्थ के बारे में अवेयरनेस किया, नेचर के बारे में अवेयरनेस किया. देन बहुत सारे चीजें लाइक अभी मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ बिकॉज आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड. आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय हार्ट. या जो मेरे दिल से आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ. और मैं एक चीज बता देता हूँ आपको. आपको दिल में जो लगे ना वो आप करो, दिल से करो. और जब भी खाना जाओ तो आप देखोगे वहाँ पे, एक्सपीरियंस देखोगे तो इतना सारा फैसिलिटीज है आपको वहाँ पे. 5 स्टार होटल से कम नहीं है वो, मैं ग्रेट गारंटी अमित. देता हूँ. अगर आप जाओगे वहाँ पे तो आप जरूर आपके हिसाब से जितना डोनेशन होगा हो सकता है आप डोनेशन करो. दैट इज नॉट अ मैंडेटरी बट यू कैन डू इट. या अमित, हमें आपकी भावनाएं समझ में आ जरूर समझ में आ गई, शब्द भी समझ में आ गए. थैंक यू यस, वेरी मच. अभी थैंक हमारे यू. साथ थैंक यू, ग्रेट. विक्रम विक्रम मकवाना जी है, जो जो अभी हमने डिस्कशन किया इसका सारांश या इसका सिनॉप्सिस हमें बताएंगे. विक्रम जी, आप कुछ Sure, ऐड करना sure. चाहेंगे? Definitely. What a great show. What a energy we can feel. We can feel it while this youth was talking about. And today I felt like like plenary का time थोड़ा बढ़ा देना चाहिए. The way everyone was talking about. And ये पूरा प्लेनरी का डेफिनेशन पूरा चेंज हो गया. पहले ऐसा होता था कि आज सैटरडे है ना. अब उल्टा हो गया है. अरे नहीं, आज प्लेनरी है तो आज डेफिनेटली सैटरडे होगा. यू नो so that's how things are changed because of this plenary, and today we have experienced that. you know आप देखिए ये राइजिंग विद काइंडनेस का मैजिक है ना. there are a lot of things that this youth want to share, lot of things, right? And such a great revelation that we have today. Be bold, start small, right? और या ये काइंडनेस की शुरुआत खुद से करिए, है ना. और उसके लिए जो बेस्ट चीज है वेलनेस प्रैक्टिसेस. जो राइजिंग विद काइंडनेस का जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ वहां पे हमने बहुत अच्छे से वो सीखा है, सारी टेक्निक्स, राइट. So with that, I think thank you so much everyone for wholeheartedly participating in this, and I think let's over to uh, over to Harshal now. यस बहुत ही बढ़िया. और मैं सभी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ. बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उनका एक्सपीरियंस, जो बहुत ही डिफिकल्ट है एक्सप्रेस करने के लिए, ये दिख रहा था कि कैसे बताएं कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया. और यही चीज़ है कि जो हार्टफुलनेस है आपके दिल में समा जाता है, और दिल में समा जाने के बाद वो दिल से कैसे व्यक्त करें, शब्द अपूरे पड़ते हैं. और यही चीज़ है कि हम जब लोगों को इनवाइट करते हैं हम उनको वही कहते हैं कि आप इसे अनुभव कीजिए, क्योंकि अगर अनुभव करने के बाद कुछ कहना बाकी नहीं रहता. तो धन्यवाद वागुली टीम, विक्रम, संदीप एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द टीम जो स्टूडियो में है लेकिन कैमरा पे नहीं है. थैंक यू वेरी मच. अभी हम हमारा नेक्स्ट जो ये है ध्यान की तरफ जाते हैं. और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप ध्यान के लिए तैयार हो जाए. आरामदायी स्थिति में बैठे, आराम से बैठे, आंखें हल्के से बंद करें, टोटली रिलैक्स. अपना शरीर पूरा रिलैक्स होना चाहिए. अभी हम ध्यान हमारे सांसों की तरफ ले जाएंगे. हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं.
इस सांसों की गति में एक तरह का लय आना शुरू हो जाएगा और सांसें जारी रहेगी। सबसे पहले हमारा ध्यान पैरों की उंगलियों तरफ ले जाना है और विचार करना है कि पैरों की उंगलियां पूरी तरह से शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। पैरों के तलवे रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे एंकल, लोअर लेग, दोनों घुटने, दोनों जांघे पूरी तरह से, दोनों पैर रिलैक्स। अब ऐसा विचार करें कि पृथ्वी में की ऊर्जा आपके पैरों में से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और ये पृथ्वी की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में संचारित हो रही है। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। और पृथ्वी का जो गुण है स्थिरता का, इस ऊर्जा के माध्यम से वो स्थिरता आप अपने आप में अनुभव कर रहे हैं। हमारा ध्यान शरीर के निचले हिस्से पे ले जाएं। हमारी जो सीट है वो रिलैक्स हो रही है। हमारी पेट, सब पाचन इंद्रिय, छाती, दोनों कंधे पूरी तरह से रिलैक्स। हमारे पीठ के सब स्नायु भी रिलैक्स हो रहे हैं। जो हमारा स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो भी रिलैक्स हो रहा है। ऐसा विचार करें कि आपके मन में और शरीर में जो भी तनाव है वो आपके पीठ में से धुएं के रूप में निकल जा रहा है। एक अद्भुत शांति का आप अनुभव कर रहे हैं। अभी आपका ध्यान हाथों की तरफ ले जाए। हाथों की उंगलियां रिलैक्स हो रही रही है। दोनों हाथों की हथेलियां, एल्बोज, दंड पूरी तरह से रिलैक्स। अभी हमारा ध्यान गले की तरफ ले जाएं। हमारा चेहरा, मुंह, नाक, दोनों गाल, दोनों कान, आंखें, हमारा माथा पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। शरीर पूरी तरह से शिथिल है, इसलिए मन भी अभी पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। हमारा ध्यान हृदय की तरफ ले जाएं और ऐसा विचार करें कि हृदय भी पूरी तरह से शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इस रिलैक्स स्थिति में हम इस विचार पे ध्यान करेंगे कि मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से ही मौजूद है, जो मुझे भीतर की ओर आकर्षित कर रहा है। भीतर कोई विचार आए तो उसे नज़रअंदाज करना है। गलती से ध्यान गया भी तो भी हल्के से हमारे मन को ध्यान के विचार पे लाना है। ध्यान शुरू करें। ध्यान समाप्त करें।
धीरे धीरे अपनी चेतना को वर्तमान की तरफ ले आए। हमारे समीप जो भी हो रहा है उसका एहसास अभी होने शुरू हो जाएगा। आंखें बंद ही रखिए। मुझे कैसा लग रहा है इसका अवलोकन करें, और ये जो स्थिति है मेरे पास, इसे मैं कैसे इसी तरह से रख पाऊं और इसको और भी समृद्ध कैसे करूं, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। जब भी आप तैयार हो हल्के से आंखें खोलें। धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये सत्र खत्म होता है। नमस्ते।